यो वेलकम दोस्तों, वी आर बैक अगेन लाइव विद अनदर लाइव। जहाँ हम खेल रहे हैं एल्डन रिंग शैडो ऑफ द अर्थ DLC, जहाँ पर वी वर फाइटिंग ऑफ कमांडर यूएस गाइस गेयोस, जो भी नाम है उसका। एंड वो बुली तो कर रहा था हम लोग को। लेट्स सी आज अपन मार पाते क्या उसको। इसका यूज़ तो नहीं हो रहा था, बट ठीक है, देख आज का फर्स्ट रन है। आई डोंट थिंक कि मैं कुछ ज़्यादा क्रेजी ओके ठीक है, कैमरा सही दिख रहा है। लेट्स स्टार्ट। वुड वी बी एबल टू डिफीट हिम टुनाइट? ओके, एक इशू हो गया है। अपना LT की काम नहीं कर रहा, इसके वजह से हम लोग सील नहीं यूज़ कर पा रहे। लेट्स सी क्या वो फिक्स होगा। हाँ, हो गया। वैसा अब क्या काम नहीं कर रहा? नहीं नहीं, हो गया फिक्स। वो अपना जो LV होता है वो काम नहीं कर रहा। काम मतलब ये गेम का इशू है। वो आहक दिया मैंने। हो गया। वो ऑल टैप करता हो तो वो इशू आता है, पता नहीं क्यों। गेम का इशू है वो। मार डाला रे इसने तो। अच्छा, हाँ, वो गेम का इशू है वो। whenever I alt tab, गेम स्टॉप्स। मतलब कभी एक्स, मतलब जो मेन बटन है, माउस बटन्स काम करना बंद हो जाता है कंट्रोलर से। मतलब फिर माउस से अगर मैंने किया ना उसको, ये माउस से एक बार किया तो फिर बाद में कंट्रोलर पे भी ठीक हो जाता है वो। पता नहीं, यही इस गेम का बहुत अनोइंग है। हाँ, बाकी सब ठीक है। और मेरा कंट्रोलर भी थोड़ा ख़राब हो गया। कंट्रोलर में जो एरोस होते हैं, लगा।
अरे यार मस्त मस्त किया था। पहले तो इतना सारी चीज़ें करो, ये 1000 इनकेंटेशन, फिर फ्लाश 10 मिनट, देन रीमेक द गेम में जाके मर जाना। अरे एंटी एंटी, हाँ भाई इस बार डॉजेस अच्छे किए मैंने, बस थोड़ा लालची हो गया, बट ठीक है यार, वी कैन डू दिस। आज मैं थोड़ा आवाज़ कम रखूँगा क्योंकि बैकग्राउंड में सोए है, तो bear with it. ये वाला लगता है भाई, और वो लगता है तो मैं फिर डॉज ही नहीं कर पाऊँगा। ये डैमेज भी नहीं लगा। हील कर ले मिमिक, मेरे को मार दिया उसने, दोनों मर गए हम लोग। ये अभी ओरिजिनल वाला वर्जन खेल रहा है ना एल्डन का? नहीं, डीएलसी चालू है वो, हाँ बट हाँ ओरिजिनल वर्जन खेल रहा हूँ टोबितो का। नहीं मतलब यस, हाँ नहीं डॉज कर सकते उससे। टाइमिंग, उसका घोड़ा भी तो मारता है, उससे कैसे पीछे बैक बैक डैश ही मारना पड़ेगा वो जब वेजिटा का पीरियड ख़त्म हुए। नहीं भाई चालू है कॉलेज के। तू ये लेके क्यों खेल रहा है? वेपन चेंज नहीं किया और है, बट मैं कंफर्टेबल इसी वेपन से हूँ। ये बहुत रोटेड वेपन है। देख, पूरा घोड़ा भी मारता है, वो भी स्वाइप मारता है। डीएलसी में कुछ अच्छे अच्छे वेपन है, हाँ मैंने भी सुना है, बट आई डोंट नो विच वेपन। इसको हराना थोड़ा डिफिकल्ट है, घोड़े से ट्राई करूँ क्या? इसको हटाओ भाई, कुछ काम का नहीं है ये।
लगता ही है ये। अरे लगना चाहिए था फक। फक लगा। भाई देख, वन शॉट करता है कभी कभार ये। मेरे मिमिक से ही भिड़वाना पड़ेगा और मेरे को हल्का हल्का डैमेज देना पड़ेगा, या तो दूर जाके फट से वेपन स्विच कर और ब्लास्फॉर्मस लेना पड़ेगा। ब्लास्फॉर्मस से हरा सकता हूँ मैं इसको। ब्लास्फॉर्मस से मारते आ जाओ, ख़त्म करो, दिमाग मत लगा ज़्यादा, टाइम वेस्ट है। लगना ही है ये वाला। लग ही नहीं रहा। एक्सक्यूज मी, मर गया व्हाट। ओके 996 का डैमेज हो तो रहा है ब्लास्फॉर्मस से। आई डोंट नो ब्लास्फॉर्मस वर्क कैसे करता है, लाइक क्लोज रेंज में ये है उसका, वही है स्ट्राइक, हार्ड स्ट्राइक ही मारना पड़ेगा। तो लेट अस ट्राई। Fuck. Oops. खत्म हो गया।
फक यार, हो गया था। ओके, मेरे को ये ज़्यादा यूज़ करना पड़ेगा। क्लॉज क्लॉज का पता नहीं, ये हर इसमें हो रहा है, इसमें हो रहा है। इसमें मेरे को बस वो ब्लू सेरुलियन को एक बढ़ाना पड़ेगा। हैकर गन है यार, ये हैकर वेपन है, बस प्रॉब्लम वही है। लेवल अप, इसका लॉकेट क्लास चार्ज। हीटिंग वेपन है थोड़ा बस। आज तो मार ही दियो। हाँ हाँ, मार देंगे आज। ब्लास्ट परफॉर्मेंस पे चलता है, इतना चीटिंग करता। ये नहीं लगना चाहिए था। क्या कर रहा है? कैसे बचूं? मिस हुआ। कोई हील नहीं है। वॉप्स। मार दे प्लीज, प्लीज मार दे उसको, मार। लेट्स गो। मर गया मर गया मर गया मर गया। लॉस से पहले एक चैट किया था, वो गया दे नहीं। वाइटी एंड ग्लिचेस, वो गया नहीं। क्या यार, अभी भी ख़त्म नहीं कर पाए? अरे को भाई, तुम डीएलसी तो कंप्लीट करो, तुम मेन गेम तो कंप्लीट करो ढंग से। क्या यार। थैंक यू फॉर फॉलोइंग एको फाउंस। थैंक यू माय फ्रेंड फॉर फॉलोइंग ऑन ट्विच। दोस्तों, जिन लोग ने ट्विच पे अभी तक मेरे को फॉलो नहीं किया, जाके कर लो भाई, मज़ा आया। हैक करके मज़ा आया गेम में। आई मीन फिर भी एको फाउंड जितना नहीं, बट किया यार, मतलब हैकर गन तो यूज़, हैकर वेपन तो यूज़ किया। इससे सिर्फ ये बढ़ रहा है, ये बढ़ाएंगे। मर गया, मैंने नहीं देखा, मैंने ये ब्लास्ट फॉर्मस से मारा रे। इससे मारा ब्लास्ट फॉर्मस से। कोई तुम जैसे नूब को क्यों ही फॉलो करेगा। दर्द हुआ भाई। कोई ना। स्ट्रैटेजी बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, स्ट्रैटेजी। मेरा ध्यान कहीं और था, पीछे जाके देख लो यार। अब किसको हराओ बताओ? क्लोजेस्ट कोई पता है तुमको तो बताओ, वरना मैं ब्लिंक ने मेरे को जो भी भेजे थे बॉसेस के नाम, उससे ढूंढ रहा हूँ मैं। मैंने मिड्रा मार दिया, मदर ऑफ फिंगर बाकी है मेरा, बैले वॉइस मार दिया, प्यूट्रेसेंट नाइट बाकी है, उसको ढूंढते किधर है। पूरा कॉपी हो गया। प्यूट्रेसेंट नाइट। मैं मॉडर हूँ, मैं गेम स्ट्रीम नहीं करता, जैसे देखो मैं
जैसे देखो मैं मॉडर हूँ, मैं गेम स्ट्रीम नहीं करता। ओके, रिस्पेक्ट। अरे थैंक यू थैंक। आई मीन वो बंदे को क्लोज रेंज नहीं मार सकता है, मार सकते, लाइक मार सकते, बट फॉर दैट यू नीड अ गुड HP डैमेज या तो गुड डॉजिंग स्किल्स। और मैं डॉज कर सकता था बट बहुत टाइम लगता मेरे को उसके डॉजेस सीखने के लिए, तो मैंने बोला दिमाग मत ख़राब करो, चुपचाप जो है उसी से काम चला लो। अबे ये किधर है? यूट्रेसेंट नाइट, ये तो कहीं डेंजरस जगह पे। लेजेंड टाइप बॉस भाई तो पानी में है भाई यार, इधर तो नहीं जा सकते अभी। काडू ट्री, काडू ट्री एवेटार, काडू ट्री एवेटार किधर मिलेगा अपने को? ओ इधर ही है कहीं तो, बट जाते कैसे पता नहीं मेरे को। अपन इसके नज़दीक में है वैसे तो, इधर ये एरिया में कहीं तो है वो। चलो इसके पास जाते हैं। नाइस। वैसे तुम हो कहाँ पे? मैं शैडो ऑफ द अर्थ ट्री पे कोशिश मार रहा हूँ, बट एक्सप्लोरेशन बहुत कम कर रहा है इसमें। जस्ट डिस्ट्रिक्ट एंट्रेंस पे जाना है। ओके इधर से बता रहा है। कहाँ से बता रहा है? ये वाला गया, इधर से नीचे आया, इधर से लेफ्ट भी गए थे बराबर। रहानी की, वेर इज़ माई शाउट आउट? अरे रहानी की शाउट आउट टू यू। शाउट आउट सबको नहीं मिलता, सिर्फ नूब्स को मिलते हैं। अच्छा ऐसा क्या? क्या तुम नूब हो? अरे क्या चल रहा है इधर चैट में? शिट। Onto this, and then climbing arches. To take a left. Gonna be a little gap, so jump over that. Cool. ये वाला एरिया पे आना पड़ेगा वापस। Where is my thanks for following? I don't know bro. Streamlabs ने नहीं लिखा। Streamlabs ain't your fan bra. बट तुमने पहले ही फॉलो किया रहेगा ना मेरे को। I don't know. I jumped bro, hello अभी किया। तो फिर प्राइवेसी स्टेटस इशू रहेगा तुम्हारा, पता नहीं, आई डोंट नो, आई हैव नो आइडिया। I'll have to check that. I mean it's not my fault technically, so you can ask Streamlabs about that. Why he ain't? तू ही बोल दे। अरे रहने की थैंक यू फॉर फॉलोइंग, बट मैं बिलीव कैसे करूँ तुमने किया है फॉलो एक्चुअल में? ऐसा भी तो हो सकता है यू आर फेकिंग इट। Oops.
आग लगा डाली भाई ने तो। इट्स एलेक्स वेल। डू यू थिंक आई एम दैट काइंड ऑफ गाय? अरे भाई अब ऐसे तो ये ऐसे क्वेश्चंस में मेरे को डालेगा तो मैं कैसे आंसर करूँगा? नहीं स्कॉम भाई ने नूब्स के सर्टिफिकेट के लिए रजिस्ट्रेशन किया। ओह ऐसा है क्या? I mean, Rahaniki is a noob, so I think the Streamlab should have given him a shout out. वर्ड किल आके नहीं दिया रहता शाउट आउट तो समझ सकता था मैं, बट Rahaniki is a noob. He is just like one of us. कैसे कैसे कैसे? भाई ये जगह बहुत ख़राब है। हाँ ना, मतलब कैसे गिर रहा हूँ मेरे को नहीं पता भाई। आई एम जस्ट फॉलिंग। लीवर पुश Then we किया। can go down where the ladder was. And go in here. ड्रॉप किया नीचे। ग्रेस मिलेगा, ग्रेस तक चलते। कुछ तो हुआ। थोड़ा हटाओ। हील हाँ किया किया। Then we वेट जाना can run है। out this back entrance. Then we can wrap around like this. इधर से गया, स्टेयरकेस And चढ़ा, we're gonna go inside this building. बिल्डिंग के अंदर गया, राइट साइड से भागा। I'm just going to try to avoid this fight up here. You might want to kill all those. We're gonna take a right where that fire guy is. इधर गया, इधर से And we need to नीचे गया। open this door down here.
Open the door. Take. There will Lift be लिया. another site of grace at the bottom of the list. अंदर आया. ओके. चलो ठीक है. बैठ के ही जाते हैं ना. कॉन्ग्रेट्स तुम्हारे 12 फॉलोअर्स हो गए. अरे थैंक यू एको बाय. थैंक यू रानी की फॉर द 12 फॉलोअर्स ऑन ट्विच. स्क्विड गेम सीज़न 3 देखा है मैंने. सीज़न 2 भी नहीं देखा है अब तक. Lift. इधर से Go this लेफ्ट. way. ग्रेस And लिया. the site of grace is Erdtree base. Right through there is the Erdtree. ओके. चलो वेरी स्कैटर्ड ट्री. आ जाओ भाई. लेकिन स्कॉम भाई कितने फॉलोअर्स का तुम किया करोगे. इतने सही रहते हैं भाई. फॉलोअर्स के बिना मोनेटाइज नहीं होता ना ट्विच पे. आई नीड 50 फॉलोअर्स एंड और भी कितना तो चाहिए रहता. 50 फॉलोअर्स एंड मरिकाज रेन. मैं फिर अनफॉलो कर रहा हूँ. क्यों भाई. ऐसा ना करो यार. बॉस फाइट क्यों नहीं हुआ. Whoops. ओए ब्लड लॉस.
शिट। अरे जाना छोरे आगे। ओए वॉप्स मर गए। इतना इजी तो नहीं रहेगा ये, पता नहीं, आई डोंट नो। देखो भाई ऐसे अनफॉलो ना करो यार, ऐसा बुरा लगता है भाई। यहाँ पे स्ट्रीम लाइक करने का ऑप्शन नहीं है क्या? नहीं, आई डोंट थिंक है। अरे रुक जा छोरे। मर गया भाई। इसका सेकंड फेज है, थर्ड फेज है, कर दूँ क्या? रिपोर्ट करने का ऑप्शन है। वेर इज़ माई पॉइंट्स फॉर द फॉलो? अरे पॉइंट सेटअप नहीं हुआ है भाई, तेरा है तो पॉइंट सेटअप करने का देखा अपना उसने, उसके लिए वो पार्ट 2 अफिलिएट चाहिए रहता है, वो करवा दो यार। क्या कर रहे हो ऐसे? लगा बहुत जोर से मारा भाई। हील करने दे। वो वो लगा, मर गया भाई। इसके कितने फेजेस है मेरे को नहीं पता, बट जितने भी है नॉट अ गुड साइन। हाउ 3 3 फेजेस है, ओके।
लग गए। हील कर ले इसको। ये नहीं लगना चाहिए था। अरे रुक जा छोरे। अरे रुक जा छोरे। रुक जा छोरे। अरे ओए गिरूंगा। रुक जा। लगा। लग गए। मर गए। 3 फेजेस है भाई इसके। पहला 2 फेजेस में एचपी लॉस नहीं कर सकते। ये पीछे जाके मार सकते हैं इसको। देखना पड़ेगा।
इसके मुंह पे मारना पड़ेगा। इधर मारने का फायदा नहीं है। डॉजेस मुंह पे, डॉजेस मुंह पे, डॉजेस मुंह पे, पर एकदम प्रॉपर काउंटर्स मारने पड़ेंगे। मर गया। You can't do this, I believe in you. Just kidding. हाँ, I can do this, but मैं थोड़ा ये हो रहा हूँ, लालची हो रहा हूँ। I think I should call the cooperator early in the game. At least he'll buy me some time. फायदा नहीं था ये हील करके। वो Oops. अरे रुक जा, अरे रुक जा, आधा डैमेज था भाई वो। ओके ओके, इजी है, इजी है, हो जाएगा हो जाएगा। ये वाले ये दो को मैं 2 रन के अंदर हो जाना चाहिए।
डॉज नहीं किया। टाइमिंग नहीं समझ रहा है इसका। अरे किसको मार रहा है छोरे? अरे लग रहा है छोरे ज़्यादा हील यूज हो गया। वही एचपी है, ये वाले में नहीं होगा। ये नहीं लगना चाहिए था। लगा भाई वो 1 HP है यार। मैं कुछ कर ले जादू। मार दिया, मार दे मिमिक। हक दिया मिमिक, 1 HP हक दिया मिमिक ने। माँ की आँख। हरामी निकला बे मिमिक। अरे गलत हो गया। मिमिक हरामी निकला। डोंट टेल मी उसके बाद भी एक फेज है भाई, मर जाऊंगा।
टाइमिंग बहुत जल्दी मर गया रे इसमें तो। लगा नहीं। लगा नहीं 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 घाई कर रहा हूँ मैं, नहीं 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 घाई कर रहा हूँ मैं। मर गया रे, मर गया है, मर गया है। क्या स्कॉम इतना सिंधी बॉस पे हग रहे हो तो। ये बहुत अर्ली हुआ है।
लगा। सॉरी। टाइमिंग। अरे रुक जा दोस्त, मर जा रे बाबा। लगा। ओ लगा। फाक नहीं, फाक नहीं, फाक नहीं ब्रो, फाक नहीं, फाक नहीं। मेरा मिमिक टीयर फुल हेल्थ में, मैं क्यों जा रहा हूँ उसके पास? हेलना ब्रो, हेलना, हेलना ब्रो।
इस बार हील बहुत बचा। ओए इससे मर गया। ओ भाई फाइनली। Finally it's dead, bro. Tan 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 taran tan tan tara da 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 tan da da ah. Okay, SKOM हो गया। 2 ड्रैगन हो गया। हिड्रा हो गया, बेली हो गया, गाइस हो गया, पुट्रेस एंड नाइट बाकी है, मदर ऑफ फिंगर बाकी है। टू कासल रिटायर मदर ऑफ फिंगर्स। इधर करना अपने को नीचे के साइड पे आना। So today I'm going to show you guys an hour-long tutorial. This is going to be areas. You don't have much of the map open, then I recommend coming back later. Most of the map open and available, some key areas. You don't have much of the map open, then I recommend coming back later to this video. But assuming you have that, we're going to start here at the Cathedral Manus of Meteor, and then we're going to go कैथेड्रल मैनेजर्स मेरा खोलना है भाई। देखते पहले उधर तक पहुंचते तो है।
इधर से खुद ढूंढूं कि क्या बोलते हो तुम लोग, क्या बोलते हो? शुड आई फाइंड इट on my own or should I take the help of the tutorial? Most of the map open and available. So that we're going to start here at the Cathedral Manus of Medir, and then we're going to go all the way to the back and talk to Ymir, who's over on the throne. After speaking to him and exhausting his dialogue, you should be given a rune. Well, I am Ymir. It is a in land so forsaken, seeing that we have convened here. Allow me to mark the occasion. Whole lead and necklace ruins map. The map, it is said that after one's fate, I only wish to be to help those who I'm not mistaken, am I? You are a fighter. I've given you a map? Oh, I suppose you... I know for power. We studied this, are you? Long ago, we too, is that not? And yet... Oh, yes, do mind your feet. You wouldn't want to hurt. Ruins map. In order to get to a particular site of grace in this cave, or you can get there from the Cerulean, get there going from this particular site of grace in this cave, or you can get there from the Cerulean coast. Now I'm going to put a little image on screen to show you routes if you don't have a certain site of grace open. Either way you get there from the Cerulean coast or what have you, you want to go from the Finger Ruins of Rhea right here, and then from the site Finger ruins of Rhea है अपने पास. from image on screen to show you routes if you don't have a... You can get there from the Cerulean coast. Now I'm going to put a little image on screen to show you routes if you don't have a certain site of grace open. Either way you get there from the Cerulean coast or what have you, you want to go from the Finger Ruins of Rhea right here, and then from the site of grace, I'm going to show you the exact route you'll want to take. In this Elden Ring boss arena, Material will either shoot a very fast... Hey everybody, today we're with the Erdtree from here. I will speed up the video a little bit to save you some time, but essentially, and then once you end up finishing one, you guys can see that location here. It's a map. We're going to head over to the Cerulean coast side of Grace. You guys can see that location here. We're going to show you how to get to the first bell from this side of... अरे Cerulean coast पे कैसे जाना है? Map, which is what we'll be going, which is here on the map. More gonna cross bridge. This is the directly to our... Definitely recommend. We're just going to head for this, and this is the finger hanging bell up here. Room bell that we're gonna get is in Hinterland. Hinterland.
which is here on the map. उधर कैसे जाऊँ मैं? ये कैसे गिरा मैं? अंधा भागता हूँ भाई, अंधा भागता हूँ। आई डोंट थिंक मेरे पास और एक बॉस मारने तक का टाइम है। बट पहुँचने तक का तो टाइम है। From the hinterland side of Grace, which is getting next. जय नहीं हुआ तो this particular site of grace in this cave, or you can get there from the Cerulean coast. Now I'm going to put a little image on screen to show you routes if you don't have a certain site of grace open. Either way you get there from the Cerulean coast or what have you, you want to go from the Finger Ruins of Rhea right this. Can knock you off your horse, and the goal is to, you know, jump down to hanging. Very good talisman. This essentially functions like a sacred tier. Very good, would highly recommend it, but go ahead and activate this, and then once this is done, you've completed this step, and recommend talisman. Get a hanger, and we're good from this like to get of Rhea right, and either way you get there. Finger ruins of Rhea. How to get to finger ruins of Rhea करना पड़ेगा अपने को. here is a quick guide on how to the Cerulean Finger Ruin to the Cerulean Coast Cross site of Grace. Head up a small hill to the north, Cerulean Finger Ruins of Rhea in Elden Ring Shadow of the Erdtree. First, you're going to want to go down to the Cerulean Coast to the ruins of Rhea in Elden. ये तो Cerulean Coast. How to get to Cerulean Coast? साला लूप फंस गया भाई मेरा. Holes on the right side and watch out for the birds. Coast. And on the left side of Grace, right to the east and you'll get to the cliff's edge. Drop down the cliff and coast. From castle front side of Grace, right to the east and you'll get to the cliff's edge. Drop down the cliff a bunch of times and on the left side at the bottom will be a big flower and a cave entrance. रुक भाई, castle front जाना पड़ेगा पहला.
Elden Ring Shadow. Now let's enter the cave. Come up a slight hill. Then you'll drop down, and I have a torch out so you guys can see better. Hug the left side and you'll come up a slight hill. Then you'll drop down into the water and you'll come to a site of grace called Elak River Cave. Once you head out into the river, go to the left. Left. Excuse me. And you'll to a site of grace called Elak River Cave. Once you head out into the river, go to the left, and you'll come to a waterfall. And be careful when you jump across the rocks. Even if you fall off, you should be okay. You'll find a cookbook on one of them. So if you fell off, you'll just have to go back if you want that cookbook. Stay to the left due to all the holes on the right side, and watch out for the birds. There'll be a smith and stone in front of one of them. You'll have to descend the mountain by jumping across rocks again, and at the bottom is another site of grace called Elak River Down. लग गए वो नहीं मिला यार बट ठीक है String. Stay to the right across this big pillar, or you could stay to the right along the mountain to jump across the platform. River downstream. Stay to the right as you head down south down the waterfall, and watch out as you jump across the platforms. Then jump to the left across this big pillar, or you could stay to the right along the mountain, and eventually you get to the ground. Keep running south and stay to the right the whole time so the fire quadrant doesn't attack you, and as you go up the hill past the trees, there'll be a big opening and you'll be greeted by beautiful blue flowers. You've made it to the Cerulean Coast, and there's another site of grace for you which is just called the Cerulean Coast. La 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 la.
अब सेरुलियन कोस्ट पहुंच गए हैं. Of the Erdtree. First, you're going to want to go down to the Cerulean Coast, to the Cerulean Coast Cross site of Grace. Head up a small hill to the north and look off. Here is a quick guide on how to get to the Finger Ruins of Rhea in Elden Ring Shadow of the Erdtree. First, you're going to want to go down to the पहले मैप ले लेते हैं. अरे हट जा. Fuck you nigga. Hell nah bro, hell nah, hell nah, hell nah. भाई ऑलमोस्ट मर गया था. वो चिंदी लोग आ गए ना बीच में. घोड़े से नहीं उतरना चाहिए था, गलती हो गया. फटफट घोड़े में चलना चाहिए था. मैं थोड़ा लालची हो गया. उसका मुंह दिखाना मेरे को.
नहीं 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 अदर हेल ना भाई 1 HP कैसे हर बार वो लॉक नहीं हुआ रहता तो उसको फिनिशर दिया रहता मैंने नसीब ही नहीं है Fuck नहीं fuck ना hell ना मैं डेस्परेट हो रहा हूँ पहला वाला ठीक था दूसरा वाले में तो गलत ही मारा हूँ मैं अब मैं डेस्परेट हो रहा हूँ अब मेरे को मारना है बस इसे
मार बहुत खा रहा हो। लगना नहीं चाहिए था। नहीं नहीं बाल चलो मैप भी मिल गया, रिवॉर्ड भी मिल गए। Lost Grace found. Dhira 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 Cerulean Coast Cross पे आना था ना? Cerulean Coast to the Cerulean Coast Cross site of Grace. Head up a small hill to the north and look off to the east. Here players can see a beach below, covered mostly in water leading to the ruins. Mount Torrent and use him to drop down to the areas below until you reach the beach. There will be a beach further to the east that leads to the ruins, with players being able to run through the water directly to the far beach. Despite the inability to see below the water, the entire path to the other side of the beach is shallow enough to walk on. On the other beach, be wary of finger spiders and head up the large stone coffin off to the back right corner to enter the finger ruins of Rhea. वाह, यहाँ पे जाना है। ओके,
from the cerulean coast or what have you, you want to go from the finger ruin to get to the bottom of the attack. These can knock you off. It is a little bit tricky because there are certain enemies with this like pink orb attack. These can knock you off your horse and stun lock you, leading up for a follow-up attack from these snakes, and they're pretty annoying. So the goal is to, you know, jump down here, and we're going to go towards these fingers are converging. And this is going to be your first like sound hanging bell talisman that I very much enjoy. And this is the Crimson Seed Talisman +1. This essentially functions like a sacred tier. Very good, would highly recommend it, but go ahead and activate this, and then once this is done, you've completed this step, and then we're going to go ahead and get our reward, and then go back to the church. Okay, so once you've done that step, head back to the cathedral once again, and we're going to go all the way to the back of the church and speak with him on his throne once more. Once again, he's going to give you another ruins map, this time a different one. Now, I will recommend from here, you don't have to exhaust his dialogue, although you can. I do recommend, if you care about it, go ahead and buy his sorcery while he's here right now, because after this step, he will be gone, and you will miss the opportunity to grab these if you don't do it here. So, may as well pick them up. They're not too expensive. And once you've done that, we're going to now head over to Bonnie Village, located in the middle of the map, because we need to get a certain gesture. Luckily, it's pretty easy. Starting from this side of Grace, we're just going to go onto this mountain and hug the left side of the wall. There is a he will be to expect map because we, and once you've done that, we're going to now head over to Bonnie Village, located in the middle of the map, because we need to. May the gleaming stars guide you evermore. Get a certain gesture. Luckily, it's pretty easy. Starting from this side of Grace, we're just going to go on to this mountain gesture. We're going to now head over to pretty easy village, located in the middle of the map, because we need to get a certain gesture. Luckily, it's pretty easy. Starting from this side of Grace, we're just going to go on to this mountain and hug the left side of the wall. There is a tiny gap here that you'll need to be mindful of and make sure that you jump it. Otherwise, you'll probably have to go back to the Grace and restart. But we're just going to go forward, and then eventually you will come across a tree with a certain item, and this is actually the item we need that will allow us to access a secret door. And so here's the Oh Mother gesture. Just go ahead and pick that up and make sure you equip it to your character from the inventory slot. And then from here, make sure you have access to the Black Keep. Again, if you've not progressed to this part of the game, I wouldn't recommend doing this at this point. You need to have access to Shadow Keep, Black Gate, Site of Grace. And then we're going to go ahead and teleport here. Once we're
in this room, once again with the Oh Mother gesture equipped, we're going to head to the back where this America statue is, assuming you've already gotten the Erdtree fragment, and then we're going to go ahead and gesture in front of statue. This very much reminds me of Dark Souls 3 with Archdragon Peak, where you need to do a certain gesture in order to unlock a secret area. Very much the same idea here. You're just going to hit this gesture, and then this door will move out of the way for you. Technically, this is not a brand new area of the map. It's just a section of it that you otherwise don't really have access to. But it may as well be a brand new playable section with how big it is. So we're going to come out here to, you know, the SKOM base sort of like area here, and then there'll be a site of grace on your left you can go ahead and pick up. Now, this section is pretty easy as far as where you need to go, but make sure you go ahead and hit this. From this site of grace, you can actually see where the ruins are on your map, and we're going to take this trail all the way down to the next site of grace. Funnily enough, from your map to go, but make sure you take this trail all the way down to the next site of grace. Funnily enough, From Software thought it would be a hilarious joke to put another double tree sentinel on this path. I mean, I think we've had enough of that in the capital, but I'm not even going to bother to fight them in this video. Don't worry about them for now. You can go back for them later, but just go ahead and cross this bridge, hit this next site of grace, and then from here, we're just going to head down the base of the mountain. It's pretty simple and straightforward. It'll get increasingly foggy as you go down, but you can mark it on your map if you want to. Essentially, you just need to get to the bottom of the hill. It's very similar to the first set of ruins that we got to, and the only difference is here, it feels like the enemies are maybe a bit more aggressive. I mean, I was getting stun locked to death trying to get down this mountain, and it might take you a little while. Honestly, it's not too lethal as long as you don't get hit by these things, but it's just super annoying. But I'm going to get down, and you can see where the fingers converge right here, and you will also be giving another talisman as a reward. However, this one is the equivalent for your FP flask. It's the cerulean badge, essentially, so that one's pretty good as well. And so once you've gotten that one, that is that step complete, and you have another इधर सेंटिनल है, वाइट ट्री सेंटिनल्स मारे क्या?
क्या होता है रे ब्लेसिंग ऑफ मरी का? 2 ब्लेसिंग्स ऑफ मरी का मिले, 1,30,000 मिला, विच आई कैन यूज एकदम क्रेजी क्रेजी। शायद अटका हुआ है, नहीं। तो 2,04,000 चाहिए अपने। घंटा बजाना उधर जाके। बच गए भाई। Talisman under your belt, and the cathedral. I can speak to Ymir once more. This time he'll be holding a big hand in his arms. It's something. But go ahead and speak to him and exhaust his dialogue. And this is your last and final chance to buy his sorceries. So go ahead and make sure you collect those if you really care about that. Exhaust his dialogue, and before you leave here, make sure you speak to one more person over here on the left pillar. Her name is Johan. She'll give you a little bit more lore about what's going on in the entire situation. And after you're done speaking with her, you actually don't need to go anywhere else. There's no more ruins we have to go chase down exactly. All we have to do is go ahead and reload the grace that we're already in. So go ahead and reload the cathedral once more, and upon doing that, Ymir should be gone and the throne should be empty. You can go up to it and interact with it and examine, and you should be able to push it out of the way. And, you know, revealing this really cool animation of an entire underfloor under this, like, giant thing. Now, if you want an extra little surprise, go ahead and interact with the throne again after it's removed, but I'll let you experience that. And then go ahead and drop down the ladder. Hand in his arm. This is your last and final. Exhaust his dialer. Her name is. Before you leave here, make sure you speak to one more person over here on the left pillar. Her name is Johan. She'll give you a little bit more lore about what's going on in the entire situation. Count Ymir, and for that, I am Yolan. The night is yours now. Ymir, in our eyes, our meeting with we know that we can, we will never. I pay me no mind. Our service.
And after you're done speaking with her, you actually don't need to go anywhere else. There's no more ruins we have to go chase down exactly. All we have to do is go ahead and reload the grace that we're already in. So go ahead and reload the cathedral once more, and upon doing that, Ymir should be gone and the throne should be empty. You can go up to it and interact with it and examine, and you should be able to push it out of the way. And now, if you want an extra little surprise, go ahead and interact with the throne again after it's been moved, but I'll let you experience that. And then go ahead and drop down the ladder here, and once you get to this area, you are going to have to fight an NPC along the pathway. You will be stopped in your tracks, but upon defeating this invader, you should have full access to this every single time, and all you have to do is simply walk to the edge of this where you can see the third and final sound hanging bell. From this point, that is the access to the boss. I won't spoil it for you. I'll let you experience it for yourself. Almost there, bro. क्या हुआ? अरे वो अभी भी है. Oh, yeah, this evening. Ah, you. Well, I poor girl. Her tongue could don't. Do you, Marika? Well, it is them. The fingers. We all are new. May you join the. अभी तो गायब होना चाहिए. हाँ, let's go. Ah, shit. यही क्यों करता हूँ मैं ऐसा हरकतें? ठीक है यार, आगे आई गेस कल अपने को बॉस फाइट मिलेगा. सो यप, मिलते हैं कल की स्ट्रीम पे बॉस फाइट के साथ. तब तक के लिए अभी अपग्रेड करना है अपने को, तो अपन वो लेके अपग्रेड मारेंगे. दो रिमेम्बरेंस आएगा जितना मुझे याद है, और एक 80,000. अभी 80,000 का रोन भी यूज़ कर लिया तो हो जाएगा. उधर तक जाके तो देखते क्या होता है.
अब क्या होने वाला है? Wait. Fuck you. होने ही वाला था रे वन शॉट. But do you think इतना easy रहेगा ये? हो सकता है possible. Why not? अरे बौखला गया है तो. और डैमेज 6 ही दे रहा हूँ मैं. मार सकते हैं इसको. देखते हैं 3-10 तक ट्राई करते हैं, वरना कल हराएंगे. सेकेंड फेज ना हो बस. मर गया मदरबोर्ड.
भाई कर रहा हूँ भाई, हील मर जाएगा ये, हिंदी बॉस है। स्कॉम। अरे तुम्हारे स्कॉम के चक्कर में लगता है मेरे थोड़े। अरे रुक जा सर। रुक जा। The connection to the Elden Ring server lost. What the heck? What the hell? nah bro। ठीक है यार, कल करेंगे, छोड़ो। इतना अच्छा ही रन चल रहा था, ये तो निकल ही जाता, बट ठीक है, नेवर माइंड। लेट्स डू दिस टुमारो। और फिर भाई क्या बोल रहे हो, स्कॉम करके। चलो यार अब हटाओ, अपन जाते सोने, कल कंप्लीट कर लेंगे इश्यूज। चलो यार, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग इन। जो आए थे, लाइक करना ना भूले दोस्तों। लाइक्स कम हुए हैं, 4 ही लाइक्स हुए हैं 25 व्यूज़ में, सो लाइक करो। चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब करो। एंड इफ़ यू हैव मनी, आई मीन 29 रुपीज़ से मेंबरशिप स्टार्ट हो रहा है, तो प्लीज़ कंसिडर बाइंग इट। 29 रुपीज़ में सिर्फ 2 वड़ा पाव सेक्रीफाइस करके तुम लोग, 2 वड़ा पाव भी नहीं, टेक्निकली 1-1.5 वड़ा पाव नहीं खाएंगे, तो फिर तुम लोग मेरे मेंबरशिप ले सकते हो फॉर 1 मंथ। एंड अगर उससे भी ज़्यादा कुछ ऐसे हेवी जंक फूड खाते हो तो वो अवॉइड करके तुम लोग बढ़िया मेंबरशिप भी ले सकते हो। सो यू डू कंसिडर द मेंबरशिप एज वेल, इट इज़ बेनिफिशियल फॉर मी, यू एंड सबके लिए। सुपर चैट्स तो छोड़ो, दूर की बात है, वो तो तुम्हारी चॉइस है, बट मेंबरशिप आई विल श्योरली से कि इट्स वर्थ इट। सो या मेंबरशिप लो। मुझे भी मोटिवेशन मिलता है, तुम लोग के लिए भी सही है, तुम लोग को भी कंटेंट मिलता है। सो या टू कंसिडर इट एज वेल। एंड लाइक कर दो, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर दो, लाइक शेयर अपने दोस्तों के साथ। एंड डिस्क्रिप्शन पे भी जो भी तुमको सोशल लिंक्स वगैरह चाहिए सब मिल जाएगा। डिस्कॉर्ड ज्वाइन कर लो, इंस्टाग्राम फॉलो कर लो, ट्विच फॉलो कर लो। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। तब तक बाय, सी यू, पीस आउट। इसके लिए फिलहाल इतना ही। आपकी तरह मैं भी मायूस हूं, लेकिन उम्मीद पर दुनिया कायम है। दिल दुखा है, लेकिन
टूटा तो नहीं है और उम्मीद का दामन छूटा तो नहीं है। इसलिए आज के लिए इतना